Subscribe to my channel Moto and don't forget to hit the bell icon to receive the latest updates. Hello and welcome back to another episode of Moto Alright guys, जैसे कि आप देख सकते हो आज हमारे पास है रिव्यू के लिए रॉयल एनफील्ड का डाइकास्ट मॉडल विच इज मेड बाय माइस्टो और इसका साइज है 1:12. दिस इज द क्लासिक 500 सिंगल सीट मॉडल मेड बाय माइस्टो स्पेशली फॉर रॉयल एनफील्ड. जैसे कि आप देख सकते हो नाम के साथ इसका पैकेजिंग भी रॉयल लगता है. सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डू द अनबॉक्सिंग. Guys, I must admit one thing over here. Among rest of the Maestro product which you get with the regular Maestro packaging is bike ka packaging is very premium. The pack is made up of thick cardboard. इसका outer part और inner part जहाँ पे ये bike installed है right now, it's made up of thick cardboard. And it gives a good protection to the product. So let me grab a small screwdriver so that I can get this bike out of this pack. So here we go guys, the bike is out of the box now और आप देख सकते हो the level of accuracy of this model is really phenomenal. It looks amazing. और वीडियो के एंड में मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए हैं इस बाइक के. Doesn't look like that this is a diecast model. Believe me guys, when I showed some photographs of this diecast model to few of my friends, they couldn't recognize that this is a diecast model. So वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसके सिनेमैटिक शॉट्स काफ़ी अच्छे आए हैं. I'll request you to watch this video till the end. So guys, इस मॉडल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साइज़ की. तो इसका लेंथ है 7 इंचेस, हाइट है 4 इंचेस और विड्थ है 2 इंचेस. इसका टोटल वेट है 130 grams. So this model is mostly made up of plastic apart from the tires and the tank. The tires are made up of high quality rubber और इसका tank जो है वो metal का बना हुआ है. To get this model look more realistic, इसमें छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया है. जैसे कि इसका ये साइड स्टैंड, गियर लीवर, रियर सस्पेंशन, moving handlebar, side mirrors, orange indicators, engine kick, brake lever, free rolling wheels, so both rear and front wheel, so दोनों ही wheel काफ़ी आसानी से आप रोल कर सकते हो. And the chrome which is used on the handlebar, exhaust pipe and on both the wheels. So overall it's a very good product guys. You get this product online. You can buy it on Amazon or you can buy it on the Royal Enfield website. इसका कॉस्ट है लगभग 1200 रुपीज़. सो लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा इसका Amazon का, तो आप वहाँ से इसे खरीद सकते हो. सो गाइस इसकी कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए हैं तो वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट ऑन दैट लाइक बटन, डू कॉमेंट and don't forget to subscribe Moto.